गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आवाज आ रही है? ओके। आज तो पता है, लग रहा था क्लास नहीं ले पाऊंगा। काम बहुत है, आजकल एग्जाम चल रहा है, लेकिन किसी तरह काम को निपटाए। हाँ, बारिश भी हो रही थी और इसलिए स्कूल में फंस भी गए थे और काम भी था। फिर पहुंच के इसीलिए 8th और 9th नहीं लिया आज, क्योंकि कुछ ऐसा काम था दैट वाज वेरी वेरी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो मैंने सोचा था कि आप लोग की क्लास से पहले ज्यादातर काम निपटा लूंगा। साइंस एग्जाम कैसा हुआ भाई जैद? कैसा हुआ पेपर? इजी एंड ट्रिकी, ओके। चलो फिर आज ये इजी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। 25 मार्क्स का था। ऑनलाइन था ऑफलाइन था क्या था? ओके। So there was MCQ types only, or means other questions, other type questions were also there. Subjective. Okay, good. चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब देखो, इस चैप्टर में हम जाहिर सी बात है एक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले, एक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले, दैट इज रिप्रोडक्शन। एंड दिस रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन को समझा जाए तो सिंपली अपने तरह का प्रोड्यूस करना, क्योंकि ऑब्वियसली दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रहा है तो उसके पीछे एक पर्पस भी होगा। तो ये रिप्रोडक्शन क्या है उसको समझते हैं, उसका पर्पस क्या है उसको समझते हैं, टाइप्स क्या है उनको समझते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मींस वी विल गो फॉर द asexual reproduction, then in sexual reproduction we'll go for the sexual reproduction in plants, then sexual reproduction in animals. In animals we'll talk about humans specifically. We will discuss male reproductive system, female reproductive system, and menstrual cycle, and some STDs. ओके, सो अगर हम यहां पे रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन is simply to produce organism of its own kind. Okay, means the production of the organism similar to the parents. We can have many definitions. Okay, the reproduction of the organism similar to the parents which are of same species and they are physically independent. तब वो अपने पेरेंट्स पे, अगर आप बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मींस प्रोड्यूस करना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे अभी हमने जेनेटिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ा था, या द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू पेरेंट्स। सो वी कैन हैव मेनी डेफिनेशन।
Means what is reproduction? The production of individuals or new individuals similar to their parents, parent or parents, is called reproduction. Is called reproduction. Or the process by which an organism produces another organism of its own kind is called reproduction. It's called reproduction. अब देखो इस रिप्रोडक्शन का एक पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड का मतलब एकदम साफ सी बात है, अपने जैसा, ठीक है, अपने जैसा प्रोड्यूस करना। कैट कैट प्रोड्यूस करेगा, डॉग डॉग, ह्यूमन ह्यूमन, बर्ड्स बर्ड्स, मैंगोज मैंगोज, रोज रोज। मींस एक स्पीशी को ही प्रोड्यूस करेगी, दूसरे स्पीशी को प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब पर्पस क्या है? देखो, हर स्पीशी सरवाइव करना चाहती है, सरवाइव करना चाहती है। दे वांट टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये जो पर्पस है इसको फुलफिल करना ये जरूरी है। टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑन अर्थ, द ह्यूमंस शुड फ्लरिश, एवरी ऑर्गेनिज्म शुड फ्लरिश। तो वो जो मकसद है वो रिप्रोडक्शन का मकसद है। ये इसीलिए रिप्रोड्यूस कर रहा है ताकि उनकी स्पीशीज इस अर्थ पे कंटिन्यू कर सके, उसकी कंटिन्यूटी को वो मेंटेन कर सके। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है, देखो, एक है इंडिविजुअल, तो मान, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है, और एक है स्पीशीज उसी की। स्पीशीज का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात समझना, देखो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, लेकिन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। अब इसको आसान सी भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में समझते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? वही चीज बता रहा हूं मैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई ह्यूमन है, मान एक इंडिविजुअल है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे तो उसकी लाइफ पे, उसकी लाइफ, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे तो स्पीशीज की सर्वाइवल पे, उसकी स्पीशीज की सर्वाइवल पे फर्क पड़ेगा। भाई जब ग्रुप ऑफ ह्यूमंस होंगे नहीं तो वो मेंटेन क्या करेंगे अपने आप को अर्थ पे? उनकी क्या कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो पाएगी? नहीं ना। तो इसका मतलब स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि जब रिप्रोड्यूस करेंगे तभी उनका नंबर बढ़ेगा। लेकिन उसी स्पीशीज में एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिंगल ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाएगा।
अगर अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं करे तो अमीबा वो जो सिंगल सेल है वो तो भाई उसके उसके लाइफ पे कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा। इसी तरह एक डॉग अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे तो वो जिंदा है, खा सकता है, पी सकता है, नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे वही चीज है कि रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पीशीज जब बोला जाता है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो सर्वाइव कर सकता है बिना रिप्रोड्यूस किए हुए, लेकिन स्पीशीज सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो, अगर लाइफ प्रोसेस की बात करो, डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अब देखो इन सिस्टम में कोई फेल कर जाए तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम फेल कर गया, इंडिविजुअल मर जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल कर गया, इंडिविजुअल मर जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम फेल कर गया, इवन उसका कोई ऑर्गन फेल कर गया, हार्ट फेलियर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, अक्सर सुनते रहते हैं, तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अफेक्टेड हो गए बाय चांस एनी हाउ, तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा। अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तब भी वो सर्वाइव करेगा, वो खुद सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, बट इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। और ये कुछ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मींस रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल for survival of individual, but it is essential for the survival. Oh, wait a second. Okay, so it is essential for the survival of species. आगे बढ़े हम। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, और रिप्रोडक्शन किसकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीन टॉपिक्स, तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। तो अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Okay, now we have two types. One is asexual reproduction, another one is sexual reproduction. Okay, now asexual means obviously here the gametes are not involved. No sex cells are involved. Okay, so no gametes or sex cells are involved. So here gametes or sex cells are involved. Okay, male produces what? Sperm, and female is going to produce what?
ovum. Okay, so here in sexual reproduction, the gametes are involved. Next one, in asexual, single parent is involved, and in sexual, two parents are involved. Means one is male and one is female. Two parents are involved, two individuals will be there. Okay, even the organisms are hermaphrodite. Hermaphrodite means the male reproductive system and the female reproductive system is there in single organism. Like earthworm. In single earthworm, you will find male reproductive system also and female reproductive system also. But for reproduction, two individuals of the, you can call it the earthworms are required. Means one individual passes the sperm into the other individual. Okay, getting my point or not? So hermaphrodite means when the parents are separate, means one individual carries male reproductive system, another individual carries female reproductive system. So that will be unisexual. Okay, means in single organism only one reproductive system is present. So we'll discuss it later. So generally two parents, that is male and female, they are required. Male produces the sperm and the female produces what? The ovum. Now next thing that we talk about is means no variation. Means if we say variation, very little variation occur. It's generally the individuals, those are produced, those are clone of the parents. But if you call about no variation, means it occurs, but it is a very slight variation, very little variation occurs. Okay, so no variation or little variation occurs. And here variation occurs. Okay, and this is the reason that sexual reproduction is preferred over asexual reproduction. Okay, sexual reproduction is preferred over asexual reproduction. Okay, sexual reproduction is preferred over asexual reproduction. Okay, why? Because this sexual reproduction creates variation. And this is very important to create diverse characters. To create diversity of the organism. Okay, that is very important to create the diversity. Diversity of the characters is required. We also discussed in the heredity. Remembering or not? We discussed this thing in the heredity also. Yes, who is remembering this? Second important thing that sexual reproduction provides new combination of genes. New combination, possibility of new combination of genes that only happens with the sexual reproduction. Okay, third thing, it also helps in the origin of a species. So that's why this sexual reproduction is preferred over asexual reproduction. Any confusion till now? Okay, so first we will carry asexual reproduction, then we will carry sexual reproduction, and there we will discuss now we have discussed the importance of the sexual reproduction right now. Means characters, diversity of the characters will be there, diversity of the organisms will be there. Okay, combination of genes
means possibility of the combination of these will occur. So we will discuss also means that I told you unisexual means hermaphrodites. Then how the gametes are formed, we will go with the means general idea with the mitosis and the meiosis. We are not going to see the details of the meiosis and all here. We will have general because we must know what's going on. And we already had this discussion when we were studying genetics. Means when the individual will be there, the gamete will be formed. So human chromosomes gets half. These all we discussed there also. And that is the same thing. Okay. So first we will carry asexual reproduction, then we will go for the sexual reproduction. So let's start with the asexual reproduction. Now, what you have to consider is the important thing is because you are going to have the subjective examination. And my instinct says because from the genetics, you must practice that crossing of the monohybrid cross and the dihybrid cross that we discussed, the height character. We took the law of segregation, law of independent assortment. उसका फ्लो चार्ट जो आप बनाते हैं, ठीक है, उसकी क्रॉसिंग जो दिखाते हैं उसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए. दूसरा, डायग्राम्स के आने की पॉसिबिलिटी चाहे वो एमसीक्यू में भी आए तो डायग्राम्स आने की पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से भी ज्यादा है. ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और वेल लेबल डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा. जैसे अभी यहां पे डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड ऑल, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करनी है. मतलब डिस्कस मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है एकदम जिम्मेदारी के साथ, टाइम निकाल के अच्छे से. ठीक है, तो चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन. तो फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग अप, जब स्प्लिट करना. तो यहां पे जो आपका एग्जाम्पल है जो लिया, दैट इज अमीबा, दैट इज अमीबा प्रोटियस. नाउ व्हाट हैपेंस इन द फिजन? For example, this is amoeba and this is cell membrane. This is cytoplasm. This is nucleus. And you can also make means because you have to show the pseudopodias too. Okay, that is pseudopodia. Okay, now what is going to happen first? When fission will occur, then in the next step, this nucleus, first karyokinesis take place. The nucleus division will take place. Okay, so this nucleus will intend to divide. Okay, means nucleus starts dividing. Then in the next step, what happens? The nucleus divides completely. Okay, see this. The nucleus divides completely. Okay, now in the next step, what is going to happen? Now you're going to get what? Two daughter amebulae. Okay, that is daughter amebulae. And they will develop two individual amoeba. Okay, so these are the steps. Means first the nucleus divides, then the cell divides. So because the cell splits up into two, so this is the example of binary fission.
This is the example of binary fission. Now, simply, if they will ask the diagram, so just go with the diagram only. And if they want explanation, and it is of 3 marks, 2 marks means also you can draw the diagram. Because see, the thing is, if you want to explain it, okay, so if you have time, then you can go with the diagram. But if there are 3 or 4, then you have to definitely draw the diagram for marks 3 or 4. Getting my point or not? And if they are saying explain the binary fission with the help of diagram only, so you have to draw the diagram only. No need for explanation. That should be well labeled. Diagram always. Now, what well labeling means? See, what is happening? Generally, what we do, we just label all the parts, and in the next steps, we don't do that. And we understand, we just think that labeling means we have to make a special labeling for it. No, this is the second step, just right here. Cell membrane. This is cytoplasm. Again, mention these parts. Okay, pseudopodia. But you must mention, don't forget to mention the spatial mechanism or process of that particular step. Because this nucleus was about to, means was started to divide. So don't forget that. Okay, nucleus is, this is the main that you have to mention it. Wait. Okay, got the point? Understood? So this is what the binary fission. Okay, now we will go for the multiple fission. Now, multiple fission means one cell is going to divide and it will form many cells, more than 2 cells. So that will be multiple fission. Okay, for example, Plasmodium vivax. That is a malarial parasite. This one is what? Resides in female Anopheles mosquito. Malarial parasite. Now, what is going to happen? This multiple fission occurs means in unfavorable condition. Means unfavorable condition for the organism. Okay, now what happens? For example, this is protozoan, that is a cell. Now, when unfavorable condition arises, then what is going to happen? This cell is going to develop an extra layer around it, and it will form what? Cyst. It will form what? Cyst. Okay, and this cyst, the covering, will prevent that particular cell inside from the harsh environment or the unfavorable condition that is outside. Now, during this period, what is going to happen? Inside the cyst, this nucleus will divide, and the membrane will enclose this nucleus around it. Okay.
That is many cells. Now, what will happen when the favorable condition will arise? This cyst wall will break and the cells inside it, they are going to release. So at the same time, many cells are going to be produced from the single cell. So this is what the multiple fission is. Any doubt in these two? If you have any doubt, any question, then you can ask. Otherwise, we'll proceed towards the next one. Multiple fission means this single cell is going to develop many cells. So what happens when there is an unfavorable condition? This extra covering comes around the cell. And during that resting period or protection period, these cells inside that cyst, this is the cyst, this is the cystic wall. It is going to protect that particular cell inside. Now, during that, they will divide and divide and divide and will produce many cells inside the cyst. Okay, so when favorable condition arises, the cyst wall will break, cystic wall will break, and these cells from inside will get released and they will come outside and they will flourish. So this is what? Asexual reproduction. Now understood? Okay, now coming to the next, that is the second type of asexual reproduction, means fission. We studied binary fission and the multiple fission. That is budding. Okay, budding means the reproduction through bud, means in simple language, reproduction occurring through bud. Okay, reproduction occurring through bud. And what is bud? Means when reproduction will occur involving the bud of the parent. That is budding. So what is bud? Bud is the outgrowth. Any outgrowth of the parent. A cell is going to divide. Cell is going to divide and divide and divide and divide and it will form a mass of cells over here. And this will appear like a bud. Got the point? So what is bud? Bud is the collection, cluster of cells. And when this reproduction occurs involving bud of the parent, it is called budding. Any doubt? So you can call it means the production of new individuals, from an outgrowth of the parent is called budding. It's called budding. For example, it occurs in hydra, it occurs in yeast. Okay. Now, how it happens in hydra? For example, there is a parent hydra and they have their tentacles. Okay. These are what? Tentacles. And this is the body of the hydra. And this one is parent. Now what will happen? This parent hydra
will form an outgrowth on its body, which will be considered as what? Bud. Okay, this will be considered as what? Bud. Now slowly, as the days passes, this bud that is going to form what? A daughter hydra. Okay, now after a few days, this daughter hydra will detach itself from the parent body, and this will form a new individual, complete individual. Okay, so in this way, the reproduction, that is asexual reproduction, in the hydra take place through budding. Now, in the similar way, obviously this hydra is what? This is a coelant trait. It is a lower animal. It is a lower animal. Now, what happens in the yeast, which is a single cell fungi or single cell fungus? Now, for example, this is yeast. Okay, so this is yeast cell. It will be having cytoplasm. It is a eukaryotic cell, as you know. And if you talk about specifically, then yeast cell will be having a cell wall, as you all know. So this is a cell wall of the yeast cell, and this is the cell membrane. Is it visible? Yes. Okay. Now what is going to happen? The nucleus of the yeast cell, that is karyokinesis, the division of the nucleus will start first. Okay, अब देखो बोर्ड क्वेश्चन कैसे देता है एमसीक्यू में. ओके, डायग्राम देगा, 4 स्टेप बनाएगा. It depends on the species and all. Okay, so अब देखो बोर्ड डायग्राम कैसे देगा. 4 ऑप्शन दे दिए और इसको शफल कर दिया. जो हमारा सेकंड, जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, तो वहां 4 ऑप्शन दे सकते हैं एमसीक्यू में. मतलब फोर्थ स्टेप को सेकंड पे ला सकता है, सेकंड को थर्ड पे ला सकता है, इस टाइप से. तो आपको सीक्वेंस ही जानना है कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है और इसको आप लेबलिंग करें. न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड ऑल लाइक दिस. Okay, now what is going to happen? In this way, see, this is the bud. This is the bud of yeast. Okay, new bud has been formed. This is the bud of yeast. Okay. Now, what happens? 2 things can happen. Either this bud will detach and then it will grow in size to become mature, or means 2 things can happen. Either the bud will detach like this and we will have 2 yeast, or we can have, means this bud will experience another division, and through this we can have a chain of it. Like this.
As you can see here, see, these are the main cell. You find small cells over it. See this, so beautifully it is there. See this is the main cell, then you find a new cell over it. This is the main cell, you find a new cell over it. You can see it. Is it visible to you, everyone? See the buds appearing on it. There is an electron micrograph is there. It is showing you budding in yeast in the 3D form. See how beautiful you can see. And this is the slide. Real slide. As you can see over here. See this. Now there is a cell, then new, then a bud over it. See, the cells are attached in a chain-like fashion. See here. Okay. So in this way, the budding in yeast occurs. Got the point? Any doubt in this? Any question? Then we'll proceed further. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction, and that is spore formation. Okay, now spore formation means these spores, means when the reproduction occurs through spores, these spores are the reproductive units. These spores are the reproductive units. And it occurs in fungus. Okay. Now what happens means how this reproduction takes place through spores. So when the reproduction takes place through the spores, by using the spores, that's called spore formation, the reproduction through spore formation. So what is going to happen, as you know that the fungus that grows on a certain you can say substrate or the base it uses, like you have seen the rhizopus, the bread mold. So the fungus always require, like the plants require the soil for the anchorage. So the fungus also requires what? The base or the substratum for the anchorage. It appears like that. So earlier it was also confused with the plants. Now in the earlier classification, later we came to know that this is another kingdom. It is different from plants. Okay, so what is going to happen if you will see fungus in the slides? So what you will find? You will find a stem-like structure. It depends on fungus to fungus. The appearance, okay, and on that stem-like structure we have what? A ball-like structure, and these ball-like structures contain what? The spores in them. And these spores, so let us see first what these structures are called. Okay, now this one is called what? The sporangiophore. Okay, and these means the connecting part, that is called what? The stolon. That is called what? The stolon.
So this is what this sporangiophore, the complete, this is called what this sporangiophore, which contains this ball-like structure which is known as sporangium, singular, and sporangia, plural. And these sporangium contains what? The spores. Okay. So this individual, this stem-like structure, you can call it what? Mycelium. Okay, got the point? Because they appear like plant only, no? They appear like plant only. And this root-like structure, that is called what? Hyphae. Now, what will happen? This sporangium, when it bursts, it releases these spores into the air. Okay, this is what? This spore. Now, when this spore will rest on certain substrate, because what fungus requires to grow? Fungus requires humidity. Fungus requires food. Means there should be a condition for the, you can call it, for the growth, for the development. So this requires what? The humidity. This requires what? Humidity means the vapor, the moistness, the food, and one base or substrate. As we take the example of rhizopus, the bread mold. So what occurs? What happens? Just do one thing. Just take a polythene, put a bread in it, then just split, you can say spray little amount of water and just close it. After a few days, what you will find? There will be a green color growth, green color patch, green color hairy substance on the bread. And what is that? That is a fungus. How it grows? Because the spores, they are still present around you. And when the favorable condition will be there, the moistness or moisture, the food, the substrate, now these spores will grow to a particular individual again. Got the point? So this kind of reproduction is called what? The spore formation. And they reproduce through spores. Any doubt? Okay. Now coming to the next one, that is, see, in some books, regeneration given and fragmentation is also given separately. In some books, fragmentation is given under the topic regeneration. So I'll make you clear. Means what is the difference and what is the common thing? Okay. Now, first we will understand regeneration. See, regeneration is a common mechanism, common process. Regeneration means to regenerate, to form again. For example, if you're cutting nail, the nail regrows. If you're cutting hair, the hair regrows. If you are wounded, skin regrows. Getting my point or not? That is simply the regeneration. But when this regeneration will be considered reproduction,
That we have to understand. For example, you might have seen the lizard. Okay. What happens when it is shed off in emergency, in fear, or during attack? So what happens? When this detaches, now this lizard regrows this tail. Okay. This is regeneration. This is what? Regeneration. Regeneration of tail. But that tail part which was left out, which was discarded, it didn't develop into a new lizard. Getting my point or not? जो पूंछ है वो दोबारा लिजर्ड नहीं बनी. हाँ, लिजर्ड के नई पूंछ निकल आई, तो वो रीजनरेशन, बस यहां तक है रीजनरेशन. लेकिन अगर यही हो कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, और ये हर एक पार्ट नया इंडिविजुअल बना ले. पॉइंट को समझना. हर एक पार्ट नया इंडिविजुअल बना ले, तो वहां पे इस रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन कहेंगे. मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन. है उस पूंछ का कुछ नहीं होता है, वो पूंछ ऐसे ही खराब, फिर उसके बाद डिकम्पोज हो जाएगी. यस, ठीक है. तो यहां पे समझो, रीजनरेशन प्रोसेस कब, रिप्रोडक्शन कब आप कहेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन. तो जब बॉडी के पार्ट्स, हर एक पार्ट रीजनरेट होके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना ले, तब आप कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू रीजनरेशन. पॉइंट समझ में आ गया? अगर यही छिपकली, ये जो पूंछ है, ये पूंछ भी नई छिपकली बनाती, इस पूंछ से भी नई छिपकली बनती, तब हम जरूर कहते कि इस छिपकली में रीजनरेशन हो रहा है और छिपकली रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस कर रही है. लेकिन यहां सिर्फ जो छिपकली है उसकी पूंछ ग्रो कर रही है, जो पूंछ उसने हटा दी थी, छोड़ दी थी, उससे नई छिपकली नहीं बन रही है. तो हम ये कहेंगे कि यहां रीजनरेशन तो हो रहा है, लेकिन रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा. फर्क समझ में आया? कि नहीं समझ में आया? तो रीजनरेशन एक जनरल प्रोसेस है, वो लोअर ऑर्गेनिज्म में और हायर ऑर्गेनिज्म में होता रहेगा. ऑब्वियसली रीजनरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मल्टी सेलुलर होना चाहिए. तो ये ऑर्गेनिज्म में होता रहेगा. लेकिन जब इसी रीजनरेशन प्रोसेस को यूज करके हर एक उसका पार्ट जो टूट गया है, जो कट गया है, वो पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल, जैसे हमने नाखून काटा, नया नाखून ग्रो हुआ, रीजनरेशन ऑफ द नेल, दैट्स इट. लेकिन हमने नाखून काटा और नाखून काटते ही उस नाखून से एक और नया साद तैयार हो गया. उस एक नाखून के टुकड़े से पूरा नया साद, पूरा नया ह्यूमन. तो हम कहेंगे इस ह्यूमन ने रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस किया. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ गया? ठीक है. तो रीजनरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे?
ठीक है, तो रीजनरेशन it is defined as the ability of an organism to regenerate its lost parts of the body which have been removed by injury, इसी इंजरी की वजह से अलग हो गए, और बाय ऑटोटॉमी, खुद अलग कर लिए, तो वो रिजनरेशन। तो अब रिप्रोडक्शन यानी ये रिजनरेशन प्रोसेस रिप्रोडक्शन में किस में यूज होता है, जैसे प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया को देखा है, हैव यू सीन प्लेनेरिया? दैट इज प्लैटीहेलमिन्थ्स। ये देखो, प्लेनेरिया, this one, virtual. Okay, this is what the planaria is. That is a platyhelminths. Okay, अब यहां पे जैसे और स्पॉन्जेस भी हैं, कुछ स्पॉन्जेस भी हैं, कुछ लोअर प्लांट्स भी होते हैं जिसमें रिजनरेशन बहुत है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपकी बुक में लगवी सी में उसको फ्रैगमेंटेशन से अलग दिया हुआ है, स्पायरोगायरम। स्क्रीन इज ब्लर, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अब होता क्या, देखो, अब मान लो प्लेनेरिया है, डायग्राम को भैया बहुत प्रैक्टिस करना, इस चैप्टर से डायग्राम आने के इतने चांसेस हैं। अब ये इसके जो आईज होती है ना प्लेनेरिया की, ये सेंस के लिए यूज होती है, दीज आर नॉट मींस लाइक अस, these are the eyes but they are using senses, they are not the fully developed eyes. So what is going to happen, for example, if accidentally this planaria is, it is cut into two parts like this, so what is going to happen, this portion of the planaria that will develop the lower part, and this portion of the planaria that is going to develop the upper part like this. So they have used, the planaria has used the regeneration mechanism, regeneration power to reproduce, because these two parts develop the new full individual. Okay, so in this case we will call it what? Asexual reproduction through regeneration. Now in some books you will find fragmentation in the same topic, that is regeneration. In some books you will find fragmentation as a separate topic, but that is the same thing. For example, fragmentation means the organism is going to divide into fragments, and each fragment will develop into new individual, like metridium, sea anemone जिसको कहते हैं, okay, and that one spirogyra, which is an algae, okay, which is an algae. Now what is going to happen, for example, spirogyra, as you can see, so you have
That is spirogyra. Now what is going to happen? Means when it will split up into two, let me show you a spirogyra. Spirogyra. This is a spirogyra. Let me take the Creative Common license image. It is an algae. You all know that. See this. So these are the free images we can use, but there will be no copyright. Okay, so these are what these are the microscopic view of this spirogyra. As you can see, so beautiful it is. As you can see over here, see there are different cells lying over there, forming a filamentous structure. Okay, now what is going to happen? Means when these filaments will break, each part will grow into new individual. More breakage, each part will develop into new individual. So more you are going to break it. Otherwise, there is a limitation for the size also. It's not mean we are going to just break each cell, then it will grow. No, there is a condition for it. So the thing is, means when you're going to break it, it will develop into new individual. Okay, as you can see here. See here. So beautiful. See, each cell. And this one is what? The chloroplast. The chlorophyll you are seeing embedded in it, the green color pigment. Okay, it forms a filamentous structure. So this will develop into what? The new individual of the spirogyra. So this is considered what? Fragmentation. So obviously it is going to use what? The regeneration power. And it is going to reproduce. But in some books, it is given under separate topic, that is fragmentation. Okay, so fragmentation is simply when the reproduction is going to take place by the fragments which have been formed. It is called what? The fragmentation. Any doubt till now? Okay, now coming to the next, and that is vegetative propagation. It is also a kind of asexual reproduction. Vegetative propagation. Now, what vegetative propagation means? When the reproduction takes place not using seeds but using plant parts, means the kind of asexual reproduction takes place by using vegetative parts of the plant. Vegetative parts of the plants like leaf, stem, root. Okay, so that will be considered as what? The vegetative propagation. Yes, Shweta, very good. Now this could be natural and this could be artificial. Natural, artificial means obviously some technique will be there, some man-made techniques will be involved, but they are going to use this part only, or this part only, or this part only for the reproduction, for the propagation. Okay, so we have the natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. For example, bryophyllum. Bryophyllum, सबने देखा है कि नहीं देखा है? You see? Now here it reproduces naturally by using leaf. Bryophyllum.
हैव यू सीन ब्रायोफाइलम? मैं सोया था कशफ का सबसे पहले आएगा जवाब। हाँ भाई, कहां सो गए सब? मैं घोसी में था तो कश्यप ने मुझे वो भेजे थे, ब्रायोफाइलम ली भेजा। अभी देखो ये ब्रायोफाइलम है, और मैंने कितने सारे ब्रायोफाइलम वो सब वहीं छोड़ के आ गया मैं। अफसोस भी हो रहा है। कुछ प्लांट्स में लेके आया था वहां से, लेकिन ज्यादातर गमले टूट गए थे। तो ये मैं मिस कर रहा हूं कश्यप। तो ये देखो ये ब्रायोफाइलम। अब क्या होता है कि इसके जो नॉच है यहां से, इसकी जो वेजिटेटिव बर्ड्स है, ये क्या है? वेजिटेटिव बर्ड्स, दे ग्रोज नेचुरली and they will develop roots and all. What will happen? Naturally, this will bud off. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया कश्यप, यहां तक आने में। चलो मैं तुम्हारी तरफ से यहां खरीद लूंगा, ठीक है? तो ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं ये बड ऑफ हो जाते हैं और वहीं सॉइल में गिर जाते हैं। मीन्स इधर गिर गया, उधर गिर गया, या आप इनको कट भी करके, इनको एक एक बर्ड को तुम कट करके, मान लो यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पे 13 वेजिटेटिव बर्ड्स हैं। तो ये जो 13 वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, आप इनको काट के 13 नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो आप इनको काट भी सकते हैं, और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सॉइल में रख दो, कुछ नहीं करना, ये इसकी रूट्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी और फिर इनका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड सॉइल न्यूट्रिशियस। सो दिस इज व्हाट द वेजिटेटिव बर्ड, vegetative propagation through leaf, that is a bryophyllum that we have seen. In the similar way, we go for the potato, that is a modified stem. और इस पोटैटो के ऊपर मैंने एक वीडियो एडुडियो पे डाला है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये पोटैटो क्या, मॉडिफाइड स्टेम। अब स्टेम में जनरली आपने क्या देखा, स्टेम जो एक जनरल स्टेम होती है उसमें क्या होता है, नोड होता है, नोड होता है और इंटरनोड होता है। अभी जो हम डिस्कस करें ये सब क्या है, नेचुरल मेथड ऑफ, ये अभी नेचुरल मेथड को डिस्कस कर, ठीक है? तो अब यहां पे जब इसमें कोई चीज भर दोगे, एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर, और खूब उसमें ठूस दोगे तो वो एकदम कुप्पा हो जाएगा, ठीक है? वही होता है आलू, स्टेम में इतना स्टार्च भर दिया जाता है कि वो फूल जाता है। तो ये जो नोड्स होते हैं वो यहां पे आपको आलू पे आई स्पॉट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है? अगर आप आलू को छोड़ दो, आपने देखा भी होगा यहां से कुछ बर्ड्स टाइप के यहां पे ग्रो कर जाते हैं, या तो ये जो होता है क्या, ये वेजिटेटिव बर्ड होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव बर्ड, ठीक है? अब आप इस एक एक आई स्पॉट को कट करके या फिर पूरा का पूरा आलू में लगा दो तो एक नया आलू का पेड़ निकल आए, या फिर इसके पार्ट्स को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके, प्रोवाइडेड कि एक पार्ट में एक आई स्पॉट होना जरूरी है। अगर आई स्पॉट नहीं होगा तो वहां से वेजिटेटिव बर्ड ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इस आई स्पॉट से आप न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ पोटैटो प्लांट, ठीक है? तो इसी तरह बहुत सारे, जिंजर हो गया, कोलोकेशिया हो गया, जिसको अरबी कहते हैं, और स्वीट पोटैटो हो गया। स्वीट पोटैटो मींस ये रूट्स, ये रूट्स का एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया लीफ का, जिंजर, कोलोकेशिया, ये स्टेम का, और रूट्स में स्वीट पोटैटो, दैट इज अ मॉडिफाइड रूट। तो रूट से आप ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया?
ठीक है, so this was all natural vegetative propagation. Tomorrow inshallah we will proceed with the artificial propagation, vegetative propagation of plant, where we will study cutting, layering, and that is one method, grafting, that we will study. Then we will go for the tissue culture. After that we will start the sexual reproduction. ठीक है, हाँ भाई शिजान, एनीथिंग, या एवरीवन, शिजान आपको कुछ एक क्वेश्चन कुछ पूछना था, आप कह रहे थे, तो अभी इसी में ज्वाइन रहिएगा, मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा, लेकिन क्लास मतलब वो रहेगी, लाइव रहेगी, ताकि आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। एनीथिंग जनरली एनीवन यू वांट टू आस्क, वांट टू डिस्कस, वांट टू से समथिंग? वायरस नॉन लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ना वो ऑर्गेनिज्म है ना वो डेड है, इसलिए उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। यू कैन नॉट कॉल वायरस इज डेड, नॉर यू कैन कॉल इट लिविंग। ठीक है, हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? शिजान आर यू देयर? शिजान है अभी कि नहीं है? तो शिजान है ही नहीं, चलो फिर और कुछ, एनीथिंग एल्स? चलो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।